Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine by grace of Almighty Allah. Welcome to the channel bio910, and this is your lesson types of reproduction in plants. In my previous lesson of unit 2, I told you about the reproduction in plants, and we have discussed sexual and asexual reproduction in plants. Now we are going to learn this topic by a t-chart. And the question may be compare and contrast sexual reproduction and asexual reproduction. हमने ये बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है, इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको कंपेयर करें, इसको कंट्रास्ट करें. तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हेयर, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हेयर आई हैव मेड अ फ्लावर फॉर यू दैट इट इज़ showing that sexual reproduction is carried out by the flower. And here I have drawn leaf, root and stem, which shows that these asexual reproduction occurs through these vegetative parts. So these are the vegetative parts that carry out asexual reproduction, and this is the reproductive part that carry out sexual reproduction. Now we are going to compare the both of the processes. It involves fusion of gametes. In sexual reproduction, there is involvement of gametes, there is fusion of gametes, there is pollination, gamete formation, pollination, and then seed formation. So all these processes are in the sexual reproduction, whereas in asexual reproduction there is no fusion of gametes. यहाँ पर gametes की कोई fusion नहीं है. Rather than this reproduction is take out by these parts. Come to second point, it takes place in flowers, and here you can see the flower and its reproductive parts, stigma, style and ovary, and these are the stamens, anthers and pollen grains. All the structures I have drawn for you. So it takes place in flowers, whereas it takes place in root, stem and leaves. तो ये root, stem और leaf किसकी होती है? That are also called the vegetative part of the plant. Come to next point, it requires flowers and seed formation. तो इस प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट है और सीड फॉर्मेशन है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डज नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड फॉर्मेशन. इसमें फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता. इट कैन प्रोड्यूस न्यू वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स. इसके लिए हम एक ही तरह के प्लांट की डिफरेंट वराइटीज़ प्रोड्यूस करा सकते हैं, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर वेरिएशंस, because there is fusion, there is fusion of gametes, and so gametes come from two different flowers or of the same flower, depending upon cross or self pollination. So there different varieties of plants can be produced, whereas in asexual reproduction identical organisms are identical to parent plants, and these identical organisms are also called clones और कॉपीज़. तो वो बिल्कुल जो है वो पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, इसमें हम कोई नई वैरायटी नहीं प्रोड्यूस करा सकते. सो इट वाज द कंपैरिजन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज़ द टी चार्ट. You know that how to draw the t.chart. The comparison table is called t.chart. Hope so कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. Stay blessed and don't forget to subscribe the channel bio910 for more lessons.